Hello friends, this is I guess a tense which is successful in creating a confusion in your mind, isn't that? Okay, so today let's completely remove all the confusions. आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे ये टेंस यूज़ होता है, कौन से सिचुएशन को ये टेंस सपोर्ट करता है और क्या जनरल एरर्स है जो हम करते हैं और कैसे उन एरर्स को स्पॉट करके रेक्टिफाई करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या सिचुएशन को केटर करता है, हम पहले वो जानते हैं. Present and future. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो ये बताता है या ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करता है जो शुरू तो पास्ट में हुई थी, तब से चल रही थी, अभी भी चल रही है और फ्यूचर में वो एक पॉइंट तक चलने वाली है. मीन्स उसका एंड होना है फ्यूचर में. लेकिन इस टेंस में हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको उसका स्टार्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंड बताना उतना ही इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे मैं आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहूँगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ा था तो उसका मतलब था कि कोई चीज़ जो शुरू पास्ट से हुई है और अभी तक चल रही है, वहाँ पे स्टार्ट दिखाना ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था. जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते थे तो उसके अंदर क्या था कि सिचुएशन पास्ट में शुरू हुई है, कुछ ड्यूरेशन तक चली थी पास्ट में और वो कंप्लीट भी हो गई. वहाँ पे स्टार्टिंग और एंड दोनों ही बताने की ज़रूरत है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी do not have to show the start, we just have to show the end. Let us see this by an example. Now, what do I mean when I say this sentence? I will have been writing 7 essays till 8 p.m. ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कहना क्या चाहता है? इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मैंने एसेज लिखना शुरू कर दिया है, मैंने कुछ एसेज शायद ऑलरेडी लिख लिए हैं, अभी भी मैं उनमें से किसी एक एसे पे हूँ और शाम को 8 o'clock तक मेरे 7 एसेज कंप्लीट हो जाएंगे टोटल. सो this is how this tense help us to convey about an action or activity which started in past, it is still going on in the present and it will end at a certain point of time in future. अब जनरली लोगों को ऐसा लगता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिफ़िकल्ट है और इसलिए हम शायद उसको यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आई थिंक इसको समझने के बाद आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना. ओके, लेट अस मूव फर्दर एंड लेट अस चेक आउट हाउ this tense would look like when we have different kinds of pronouns. So here we go. Okay, so let us see. Let us take a verb and see how it looks here. Let's take a simple verb, say write. So we can say I
will have been writing or singing or telling stories. Let's say write. Now मैं चाहती हूँ कि आप आगे का लिखना आप शुरू करें, चेक करें कि क्या आपने सही लिखा है। Yes, in all these sections, in all these pronouns, the form of verb remains same. Now, I guess that now at this point of time you know why have we written have and been. Yes, it is because we are having the perfect tense, the perfect form of the tense, and so we have and been. Did you see that here we don't require in future perfect or future perfect continuous tense, we do not require be over here as we did when we were doing future continuous. That is so because we have the first form of the verb have, and hence we do not require anything to support will. But because we are having have here, we will require been to support the verb have. Okay, let's move further and make a sentence and try converting it into question and negative. Okay, so here we have a sentence and I would like you guys to try converting this into question and negative. Pause the video, try doing it by yourself and see if you get it correct. Okay, let us see. They will have been building. Now they will have been building. Do I have a verb already present in this sentence जिसका मैं help लेके ये sentence को question में convert कर सकती हूँ? Yes, I do have the verb will. So how will this look like? Houses till the end of the year, that remains the same. At the end we need to put a question mark. So this is how you convert the sentence into question. Now let's try changing this into negative. How will this be? They will not have been building houses till the end of this year. There it goes. Isn't that easy? So here, now I think that till now, by understanding how to use this sentence, how to use this tense, in what situation is this tense used, I think by understanding all this, now you have become independent to use this tense. Let's go ahead and check what are the common errors while using this tense. Okay, so let's make a few sentences and I'll create errors and you over there will be spotting them. Let's try one more. Okay, so here I
sentences, and I hope that you successfully have spotted the errors. In the first sentence, what is the error? Can you guess, or have you guessed already? The child will has. Yes, I have used a wrong form, and I will not have has, I have to use have. Yes, what about this? Is there any error, or is there one error or two errors? Are you able to find any error over here? This sentence contains no error. The entire sentence is correct. Yes, you already know this, right? So that's great. So I think that by now you have understood the situation which future perfect continuous tense caters. How do we make sentences? What type of sections or what type of situations do we use to support the entire meaning of our sentence? And what are the words that we use to show the time? I think by now you will successfully be able to use this tense.